बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंजीनियर अरसलान अमजद। हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथड्स STA-630 के शार्ट लेक्चर्स। और हर शार्ट लेक्चर के एंड में मैंने आपके लिए लेसन के मुतल्लिक़ MCQs बनाए हैं, जिन्हें हम लेक्चर के बाद सॉल्व करेंगे। तो आइए व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का लेसन है लेसन नंबर 14, इथिकल इश्यूज इन रिसर्च। ये प्रीवियस लेक्चर का ये कंटिन्यू है। इंट्रोडक्शन टू ethics in research. Ethics are the moral principles that guide behavior and decision making in research. The primary goal of ethics in research is to ensure that no one is harmed or suffers adverse consequences from research activities. Despite this, unethical practices such as violating non-disclosure agreements, breaking respondent confidentiality, misrepresenting results, and deceiving participants are still prevalent. तो इसमें वो कहता है कि अखलाकियात वो अखलाकी उसूल हैं जो रिसर्च में रवैये और फैसला सादी की रहनुमाई करते हैं। रिसर्च में अखलाकियात का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि रिसर्च सरगर्मियों से किसी को नुकसान ना पहुँचे या इसके मनफी नताइज ना हो। इसके बावजूद गैर अखलाकी तर्ज अमल जैसे कि अदम इंकशाफ के मुआहदों की खिलाफ वर्जी, जवाब दहान की राजदारी को तोड़ना, नताइज को गलत बयान करना और शरका को धोखा देना अब भी राइट पे है। Again, deception in research. Deception occurs when participants are not fully informed about the nature of the research. While some argue that deception should never be used, others justify it for two reasons. तो इसका पहला रीज़न है to prevent bias in respondents, to protect the confidentiality of a third party. Deception should be used if it is justified by the study scientific, educational, or applied value, or there are no feasible alternative. Informed consent is still required before participation. आगे हमारे पास debriefing. Debriefing is the process of informing participants about the true nature of the research after data collection, especially if deception was involved. It includes explaining any deception used, describing the hypothesis and purpose of study, sharing the study results, providing follow-up care if needed. डीब्रीफिंग डेटा इकट्ठा करने के बाद शरका को रिसर्च की असल नीयत के बारे में मतला करने का अमल है, ख़ास तौर पर अगर धोखाधड़ी शामिल हो। इस्तेमाल शुदा किसी भी धोखे की वजाहत करना है, मुतालिया के मफरूज़े और मकसद को बयान करना है, मुतालिया के नताइज का इश्तराक करना है, अगर ज़रूरत हो तो पैरवी की देखभाल भी फराहम करना होता है। राइट्स टू प्राइवेसी, obtaining signed non-disclosure agreements, restricting access to respondent information, allowing participants to refuse any questions. तो हमारे पास ethics and sponsor non-disclosure, keeping the sponsor identify confidential, purpose non-disclosure, protecting the purpose of the research, findings non-disclosure, keeping the research results confidential until necessary. Researchers and team members carrying out the research without bias, accurately recording data, signing confidentiality agreements. अभी हमने लेक्चर को स्टडी किया, अब हम इसके मुताबिक MCQ को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इथिक्स इन रिसर्च? टू इंश्योर एक्यूरेट रिजल्ट्स, टू अवॉइड लीगल इश्यूज, टू इंश्योर नो वन इज हार्म और सफर्स एडवर्स कंसिक्वेंसेज, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन रेट्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, टू इंश्योर नो वन इज हार्म और सफर्स एडवर्स कंसिक्वेंसेज। नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइथिकल एक्टिविटी इन रिसर्च? Following legal guidelines, breaking respondent confidentiality, obtaining informed consent, debriefing participants. तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, breaking respondent confidentiality. Number 3, deception in research is considered ethical when it improves response rates, the participants are not informed, the study expected value justifies it, it involves financial incentives. तो ये हमने अभी पीछे अपने रिसेंट लेक्चर में भी स्टडी किया है कि ये उस वक्त ये एथिकल है जब द स्टडी एक्सपेक्टेड वैल्यू जस्टिफाइज इट।
Question number 4. Informed consent in research involves giving participants financial rewards, fully disclosing the research procedures, hiding the purpose of the study, manipulating participants to agree. तो इसका correct option है B. Fully disclosing the research procedures. Question number 5. Which of the following should be provided to participants after research involving deception? Financial compensation, post-study debriefing, confidentiality agreement, legal advice. तो इसका हमारे पास correct option है B. Post-study debriefing. Question number 6. Debriefing after a study usually include withholding information about the study and explanation of any deception used, collecting additional data, reporting participants to authorities. इसका correct option है B. And explanation of any deception used. Number 7. What is the participant right to privacy in research? To know all other participants, to refuse to answer any question or participate, to demand payment for participation, to design the research study. इसका correct option है B. To refuse to answer any question or participate. Number 8. A signed non-disclosure document is primarily used to protect respondent confidentiality, increase participant involvement, manipulate research data, confirm participant assent. इसका correct option है A. Protect respondent confidentiality. Question number 9. The right to quality research for a sponsor includes being involved in all participants' interviews, receiving research data promptly, ensuring appropriate research design for the question, assessing personal data for respondents. इसका correct option है C. Ensuring appropriate research design for the question. Number 10. Which of the following is considered an unethical request by a sponsor? Violating respondent confidentiality, receiving detailed data, analysis, using an external consultant firm, protecting sponsoring non-disclosure. तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए. Violating respondent confidentiality. Question number 11. Anonymity in research protects the identity of its respondents, the researcher's credentials, the study findings, the research timelines. तो ये कह रहा है कि जो रिसर्च में गुमनामी होती है वो असल में क्या होती है, तो वो आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स होती है जो कि हाइड होती है, गुमनामी होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. व्हेन इट इज़ इनअप्रोप्रिएट टू यूज डिसेप्शन इन रिसर्च, when it biases the respondents, when it protects a third party, when the participants give informed consent, when it involves minimal risk. तो इसका correct option है A. when it biases the respondents. Next है question number 13. Which of the following is not a way to ensure a participant's right to privacy? Restricting accessing to data instruments, revealing respondents' information with written consent, obtaining oral consent only, conducting interviews without prior permission. तो इसका correct option है D. Conducting interviews without prior permission. Question number 14. What should be done if a research study involves children as a participants? Oral consent from the children is enough. Obtain consent from a parent or legal guardian. No consent is required. Use deception to protect the children. तो इसका हमारे पास correct option है B. Obtain consent from a parent or legal guardian. Question number 15. Which of the following is an ethical responsibility of the research towards their team members? Ensuring participants' anonymity, ensuring team safety, disclosing or sponsor information, limiting research scope. तो इसका correct option है B. Ensuring team safety. Question number 16. Which type of confidentiality involves hiding the research sponsor's identity? Purpose non-disclosure, finding non-disclosure, sponsor non-disclosure, data non-disclosure. तो इसका हमारे पास correct option है C. Sponsor non-disclosure. Question number 17. In research, confidentiality means sharing participants' information only with researchers, no disclosure any data subset to third parties, ensuring participants know the sponsor identity, allowing participants to access all study data. तो इसका correct option है B. Not disclosing any data subset to third party.
Question number 18. The researcher's obligation to be truthful includes always informing participants about the purpose of the study, giving false information to protect study integrity, only sharing findings with the sponsor, providing accurate and honest data. इसका correct option है D, providing accurate and honest data. Number 19. Ethical compliance from team members in research involves altering data to fit the desired outcomes, protecting the anonymity of respondents, ignoring any ethical dilemmas, prioritizing sponsor demands our ethical guidelines. तो हमारा correct option है B, protecting the anonymity of respondents. Question number 20. Why it is important to limit the time required for participant involvement in research, to ensure data accuracy, to respect participants' right to privacy, to reduce research cost, to avoid the need for informed consent. इसका correct option है B, to respect participants' right to privacy. थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।